are you all? I hope you all are doing great. So in today's lecture we will be discussing about chapter 1 sets, exercise 1 point. Today we are going to discuss about complement of set with properties and examples 20, 21 and 22 we are discussing today. So let's get started. So majorly what is complement? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, तो आज हम एक एग्जाम्पल से डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट. कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मीन्स सपोज दिस इज द गिवन सेट 1, 2 and 3 and the universal set is 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now if we do that, complement is majorly known as this. A dash means complement, A complement, okay. Universal minus of A is known as complement of A which does not belongs to A. मेनली ये होता है which does not belong to A. फॉर एग्जाम्पल ये जो हमने एग्जाम्पल लिया, यूनियन क्या हो गया हमारा 1, 2, 3, 4, 5 and 6 माइनस ऑफ ए. ए क्या हो गया हमारा 1, 2 and 3. ओके, नाउ अब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या बचा, दैट इज़ 4, 5, 6 वर लेफ्ट देयर. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए. ए को यहाँ पर कौन कौन से बिलोंग करते थे नंबर्स 1, 2 and 3. 1, 2 and 3 को हमने माइनस कर दिया तो बचा गया 4, 5, 6. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए. तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट वो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम उसे बोलते हैं विच डज नॉट बिलोंग टू ए. चाहे वो सेट ए कोई भी हो विच डज नॉट बिलोंग टू ए, हम तब उसे कॉम्प्लीमेंट सेट कहते हैं. और कॉम्प्लीमेंट को ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं लाइक दिस. ए डैश हो गया या बी डैश हो गया तो मीन्स दिस सेट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. आई होप यू गॉट इट. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. Now the properties of complement, some of the properties of the complement set is complement law. The first one is complement law. So now the first one is complement laws. First one में हमें ये बोला है A union of A complement is equals to union. अब हमें इसको प्रूफ करके दिखाना है कि A union of ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनियन के होता है, यूनिवर्सल सेट के होता है. ओके, तो हम यहीं पर एक एग्जांपल ले लेते हैं. सेट ए हमने ले लिया 1 and 2. यहीं पर हमने एक सेट ले लिया यूनिवर्सल सेट कॉल्ड 1, 2, 3, 4. दिस इज द यूनिवर्सल सेट. ओके, नाउ व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ए. तो ट्रांसपोज ऑफ ए वी हैव टोल्ड यू द फॉर्मूला ऑफ ट्रांसपोज ए निकालने का, यूनिवर्सल माइनस ऑफ सेट ए. सो यूनिवर्सल यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल इज 1, 2, 3 and 4. सो माइनस ऑफ सेट ए, व्हाट इज सेट ए 1 and 2. हमने अब इसको माइनस किया, सो व्हाट वी गॉट, हमने यहाँ पर इसको माइनस किया तो व्हाट वी गॉट इज 3 and 4. ओके, what we got is 3 and 4. So this is the A transpose. Now A transpose, this is what we got. Okay, now हमें क्या प्रूफ करना था, A union of A transpose is equals to universal set. ये हमें प्रूफ करना था. अब हमारा A क्या था, A था हमारा 1 and 2 और हमारे यूनियन में A ट्रांसपोज क्या है 3 and 4 इज इक्वल्स टू क्या आया हमारा यूनियन 1, 2, 3 and 4. और ये किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, क्योंकि हमने यूनिवर्सल सेट यही लिया था. वी चूज दिस यूनिवर्सल सेट. सी हम यहाँ देख सकते हैं ऊपर
हमने यहाँ यूनिवर्सल सेट भी यही चूज़ किया था 1 2 3 एंड 4 एंड वी गॉट द आंसर एज वेल एज 1 2 3 एंड 4. So hence proved that A union of A transpose is equals to universal set. Okay, this is what you have to remember. A is equals to A transpose is equals to the universal set. This is the first property we have discussed today. Now we were going to discuss another property. That was the second one. इस complement laws में ही second property we are going to discuss. A intersection of A transpose is equals to phi. So let A is equals to 1 and 2 again. 1 and 2 again we are letting it 1 and 2 and universal set be 1 2 3 and 4 and 5. Okay, we are letting it 1 2 3 and 4 with the universal set. Now but अब हम A ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे? दिस इज द फॉर्मूला कॉल्ड यूनिवर्सल माइनस ऑफ सेट A. दिस इज द कॉम्प्लीमेंट सेट का फॉर्मूला. ओके, नाउ यूनिवर्सल, व्हाट इज यूनिवर्सल? 1 2 3 4 5 was the universal set minus of A set. What is the set? 1 and 2. This is the set. Now what we got is minus कर दिया हमने 3 4 5 we have got. This is called A complement. This is what we got. 3 4 5 is our A complement. Now हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना है. So now A, we have to prove that A intersection of A complement is equals to union. This is what we have to prove. Now we got A is 1 and 2. Intersection of A complement, that is 3 4 and 5 we have. This is the complement now, is equals to universal set. Okay, so यहाँ इंटरसेक्शन क्या है? इंटरसेक्शन मतलब जो भी यहाँ पे सेम प्रॉपर्टीज हो हमें उसको लिखना है, बट यहाँ पर तो कुछ भी सेम नहीं है. दैट इज कॉल्ड फाई. तो यूनिवर्सल सेट, दैट दिस इज द सेम थिंग व्हाट वी हैव टू प्रूव इज हेंस प्रूव्ड, क्योंकि ये प्रूव हो गई है. हेंस प्रूव्ड A intersection of A complement is equals to universal set is equals to phi, sorry, is equals to phi. यहाँ पर भी phi आना है, यहाँ पर भी phi आना है, because this is not equals to universal set. Okay, this is the phi. हाँ, क्योंकि यहाँ पे तो universal set के कोई equal है ही नहीं. यहाँ पे तो only phi आ रहा है, कोई सेम ही नहीं है intersection में. I hope you got it. So now we were discussing the another property of this. Now the another property called dmorgans law. This is the now the second property is dmorgans law. This is the very important law. You have to study it very carefully. हम इसका मेनली प्रूफ वी विल डिस्कस विद एग्जाम्पल, आपको उससे बेटर समझ आएगा. A यूनियन ऑफ B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट. ये हम डिस्कस करेंगे प्रॉपरली विद द एग्जाम्पल्स. एंड दिस सेकेंड पार्ट वाज A इंटरसेक्शन ऑफ B कॉम्प्लीमेंट is equals to A complement union of B complement. Okay, now the third was law of double complementation, which means that A complement and A complement to complement is equals to A देता है हमें. So अब हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? Now suppose we are taking and A is equals to, we are taking 1 and 2 again. आप कुछ भी ले सकते हैं, तब भी सेम ही प्रूफ आएगा. यूनिवर्सल इज इक्वल्स टू 1 2 3 4. ओके, नाउ अब हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं? व्हाट इज़ द फॉर्मूला? अब तक तो याद हो गया होगा. यूनिवर्सल माइनस ऑफ सेट ए, यूनिवर्सल माइनस ऑफ सेट ए. नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल? 1 2 3 4 माइनस ऑफ ए, व्हाट इज़ 1 and 2. ए इज़ 1 and 2. नाउ अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया हमारे पास? 3 and 4. This is what we got. Now अब A कॉम्प्लीमेंट का दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना है हमें, तो अगेन कॉम्प्लीमेंट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A कॉम्प्लीमेंट का हमें दोबारा कॉम्प्लीमेंट करना है, मीन्स यूनिवर्सल माइनस ऑफ A कॉम्प्लीमेंट. नाउ यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4. नाउ A कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या आया? 3 and 4. सो हमारे पास आ गया, माइनस करने के बाद वी गॉट 1 and 2. दिस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल्ड इट एज A, क्योंकि A ही तो हमारे पास ये आया
सी केयरफुली, ए हमारे पास ये आया था, हमारे हमने लेट किया था, ए ट्रांसपोज 3,4 आया। अगेन हमने ए का ट्रांसपोज अगेन किया, दैट व्हाट वी गॉट इज़ 1 and 2, वट वी गॉट इज़ 1 and 2। तो इसको किसके इक्वल रख सकते हैं हम, ए के। सो हेंस वी कैन प्रूव, वी कैन, ये हम लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड A transpose again transpose is equals to A. This is the proof of this property. I hope you got it. So now we are moving to the next property. So now we are moving to next property. Just a second. So now the next property is fourth laws of empty set and universal set. Law of empty set and of universal set means phi complement is equals to universal and of universal complement is equals to phi. अब इसको हमें कैसे प्रूफ कर सकते हैं ना, अगर हमें फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाई का कॉम्प्लीमेंट वी हैव टू फाइंड इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ऑफ फाई। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया, फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल, हेंस प्रूव्ड। बिकॉज फाई तो कुछ होता नहीं, मीन्स फाई मीन्स खाली एम्प्टी मीन्स जीरो, तो फाई यूनिवर्सल माइनस ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल, तो फाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव अगेन, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट। तो यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या होता है, यूनिवर्सल माइनस ऑफ यूनिवर्सल, तो व्हाट वी गॉट फाई, because this is universal minus universal. And now we are doing now all the properties were done. Now we are focusing on our examples. Okay, so our first example is 20th one. Let the universal set दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and A is equals to 1 2 3 4 and we have to find A complement. This is a very easy example, you guys can easily done it. This is kind of a बच्चा थिंग, बिकॉज हम कर चुके हैं ये वाला पार्ट। यूनिवर्सल बोल रखा है हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके, ए हमें दे रखा है बट वी हैव 1 3 5 7 and 9, 1 3 5 7 and 9 we have our A. Now we have to find A complement. So what is the formula of A complement? A complement is equals to universal minus of A is called A complement, universal minus of A. What is the universal? That is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 is the universal minus of 1 3 5 7 9. So हम डायरेक्ट अब थोड़ा बड़े डायरेक्टली करने की ट्राई करेंगे। So what we got 2 4 6 8 and 10. So this is called complement of A. This is the answer. You guys can match it from the book as well. We can match it from this. This is the A complement. Okay, this is the A complement. Now we are going for example 21. Okay, now we are going for example number 21. Let U be the universal set of all the students of class 11th of a co-educational school and A be the set of all the girls in class 11th and find A complement. So अगर एक क्लास है 11th
क्लास है ऑफ 11 जिसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं, यूनिवर्सल सेट। फुल क्लास 11th वॉज द यूनिवर्सल सेट। ओके, ए दे रखा है हमें सेट जिसमें ऑल द गर्ल्स वर देयर। ओके, सेट हमें दे रखा है ऑल all the girls of class 11th। see 11th। okay, now माइनस करेंगे तो what we get of a complement is all boys from class 11th। ओके, ये कैसे आया? क्योंकि सारी ऑल क्लास मतलब क्या होता है? ऑल क्लास 11 मीन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। ओके, एक क्लास में बॉयज़ एंड गर्ल्स होते हैं। देन अगर एक सेट हमें दे दिया इन्होंने क्लियरली गर्ल्स का, पूरी क्लास में से सारी गर्ल्स होनी चाहिए, तो बचा क्या बी सेट में? जो यूनिवर्सल माइनस करके आएगा ए कॉम्प्लीमेंट विच इज़ नॉट बिलोंग टू ए, तो वो बॉयज़ होंगे। दिस इज़ द आंसर। ओके, नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द अनदर एग्जाम्पल। नाउ आर एग्जाम्पल नंबर 22। इसमें ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसमें हम प्रूफ भी करने वाले हैं। सो लिसन इट वेरी केयरफुली। हमें क्या फाइंड करना है? लेट ए इज इक्वल्स टू लेट यू इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। हमें फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट। सो व्हाट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट? हमें ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस ऑफ ए। यूनिवर्सल व्हाट वी गॉट इज, हमारा यूनिवर्सल क्या है? 1 2 3 4 5 6 माइनस ऑफ ए करो, कितना आएगा? क्या आएगा? हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 1 4 5 and 6 were the A complement. Okay, now we have to find the B complement. B complement universal minus of B. Universal, what is the universal? Is 1 2 3 4 5 6 minus of B करेंगे 3 4 5. What we got is 1 2 and 6. 3 4 5 were the B part, तो minus हो जाएगा. We got 1 2 and 6. Now we have to find A complement intersection of B complement. This is what we have to find. हमने A और B complement निकाल लिए. We have to find A complement intersection of B complement. Now we have A complement and B complement. अब इनका intersection निकाल लेंगे. A complement is 1 4 5 and 6 and intersection of B is 1 2. Complement of B is 1 2 and 6. This and this. अब इनका इंटरसेक्शन इनमें क्या क्या सेम है? 1 and 6 were the intersection. Okay, now the complement of A. Now wait. Now the complement, ये जो आया इसको हम कहेंगे A complement intersection with B complement. This is 1 and 6. Okay, now what we have to find? A union and A union B, and hence show that A union B is a complement is equals to A complement intersection of B. This is the proof. हमें ये proof करके दिखाना है. Okay, now hence show that A union complement. A union A क्या है हमारे पास? Now we have A क्या है हमारे पास? A we have 2 and 3. B we have 3 4 and 5, and the union sets 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 and 6. This is the universal set, and we have to find A union B complement is equals to A complement intersection with B complement. This is what we have to find. So हम पहले फाइंड कर लेते हैं A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो A यूनियन B क्या होता है? पहले हम A यूनियन B फाइंड कर लेते हैं, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे. पहले A यूनियन B क्या होगा? 2 3 4 and 5.
Now what is the union? Is 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and minus of A union B. What is the A union B? Is 2, 3, 4 and 5. Now माइनस कर देंगे तो क्या आया? 2, 3, 4, 5 माइनस करेंगे तो 1 and 6 were A union of B complement. Okay, now we have to prove. We have proved this part of the equation, that is left hand side we have proved it. Now we have to prove the right hand side. We have to prove the RHS. Now A transpose A complement intersection of B complement. हमने यहाँ पर find किया था what is A complement and what is B complement. We have just find over here what is A complement and B complement. This is what we have to find. This is what we have find already, A complement and B complement. So we put in the RHS. Okay, now A complement is 1, 4, 5, 6 and B complement is 1, 2 and 6. 1, 4. A complement is equals to 1, 4, 5 and 6, and we find B complement is equals to 1, 2 and 6. So what is the complement? So this is the complement, and now we have find intersection. इंटरसेक्शन इन दोनों का निकालेंगे तो इनमें सेम क्या आ रहा है? 1 आ रहा है दोनों में एंड 6 आ रहा है दोनों में सेम. सो दिस इज फाइन. ये हमें प्रूव कर देता है. हेंस proved that LHS is equals to RHS, means left hand side is equals to right hand side, because A complement intersection of B complement is 1 and 6 and A union of B complement is equals to 1 and 6. So it is hence proved now that both answers were 1 and 6. So this is proved. So this is for today's class. This is done for today's class. I hope you like it. So please like, share and subscribe. Thank you.